Hello everyone. This is the second lecture on an interview with Dr. Christiaan Bernard that is prescribed in the syllabus of second semester of B.Sc. I am Dr. Meet from Department of English, Government National College, Sirsa. Now let's begin with a quick recap of what we did in the previous lecture. We came to know that Dr. Bernard and his team of 20 surgeons conducted first human transplant. They have been involved in heart surgery for more than 9 years using heart-lung machine. Human heart transplant was just a progression of their ability to tackle bigger heart operations. In certain patients, the heart was beyond repair and could only be cured by replacing their hearts. Dr. Christiaan Bernard was born and brought up in South Africa. In 1948, National Party put strict apartheid laws in place. This was an unacceptable situation to him. He grew among non-whites who would come to their house for tea or dinner. His father believed that such discrimination, the discrimination that was put in place by apartheid laws, was against the teachings of God. It is wrong to presume, he tells us, that everyone who opposed apartheid was sent to prison. He tells us that he himself opposed apartheid. In 1970s, he delivered a lecture against apartheid. The title of the talk was, "Why We Deserve to be Called Nazis." He compared in this lecture the Nazi laws to the apartheid laws. Now, we carry on with the next part of the chapter. As he tells us that he gave a lecture where he compared the apartheid laws to the Nazi laws. And of course, this speech was not very popular. People did not like it. And Enram, being a journalist, asked him, was it reported in the press whether this was the views he gave were reported in the press or not? And his response is, oh, yes. The man who spoke after me said, this talk has generated enough heat to melt the ice cream. The speech passed because South Africa had received such bad publicity, and the government in power was very, very pleased that here was some good news. A South African doctor has got the first heart transplant. He is an Afrikaner, and they treated me extremely well. They wined me and dined me, and I was the blue-eyed boy then. Now, he says that, of course, it was reported in the press, and in fact, the people over there also knew that it had the potential of being something controversial or generating heat. Okay, and he, in fact, remarked after his speech that this talk has generated enough heat to melt the ice cream. कि काफ़ी उससे जो है heat generate हुई. And that, उसका मतलब क्या है कि वो जो उसने views रखे थे, they were controversial enough, and they would lead to a lot of debate and lot of even resistance or protest from the other side. But the speech passed. वो चल गई. किस लिए? Because South Africa had received such a bad publicity. क्योंकि उस टाइम पे जो पूरी की पूरी जो world थी, that was criticizing South African government for its apartheid policies. And there was some good news, because then Africa was looked down upon as some place that there was nothing positive happening, and it was very racist and regressive kind of society. So here was some good news that a doctor from Africa had done the first heart transplant. So in that sense, he says that they treated me extremely well. And he uses the expression wined me and dined me. And what does it mean to entertain someone at a restaurant with good food, wine, etc.? Means to treat somebody very well. So I was treated very well, he says, because I was the blue-eyed boy then. Blue-eyed boy means it's again an expression which is used to mean for a boy or a man who is liked very much and is treated well by someone, especially someone in authority or in government. So he says, I was liked by the people in authority because I was the good publicity for them, and they treated me very well. कि मेरे साथ उन्होंने बहुत अच्छा सलूक उस टाइम पे किया, because I was the poster boy of something positive happening in Africa.
Then I gave a talk one night in which I said to the people there, I want you to help me answer certain questions. When I go overseas, they ask me these questions and I am unable to answer them. I said, how do I answer the question when they ask me, Dr. Bernard, you have people at home who work for you. They are usually black people. When your child is sick, they look after your child, they feed the child, they bathe the child. But when the child goes to hospital and that maid is a nurse, she cannot look after the child. And white black nurses were not allowed to look after white patients there. Now he says that I gave another lecture then. So he did not stop, चाहे उसको लोग अच्छे से treat कर रहे थे, but he said I gave another lecture and where I asked people, वहाँ मैंने लोगों से कहा कि I want you to help me answer certain questions, कि कुछ चीज़ों के आप जवाब देने की मेरी help करिए. और वो question कौन से थे? वो उसके मन में नहीं आ रहे थे. These are the questions he was asked when I go overseas. Overseas means when I go to another country. And the people there ask me certain questions. And I am not able to answer them. मैं उनका जवाब नहीं दे पाता हूँ. And I would like you to answer them ताकि मैं उनके जवाब दे सकूँ. So it's his way of telling them that the whole world is questioning us. और वो क्या सवाल थे, वो क्या questions थे. How do I answer the question when they ask me, Dr. Bernard, you have people at home who work for you and they are usually black people. कि आपके जो घर पे काम करते हैं वो लोग ज़्यादातर black होते हैं. When your child is sick, they look after your child, they feed the child and they bathe the child. So when your child is not well at home, who looks after that child? Your black maid, for example. And she will take care of it, she will feed it, वो उसको खाना खिलाएगी, नहलाएगी. But if that child goes to hospital, the same black nurse, same in the sense, similar here it means that maid is a nurse. It means that a person from the same race that is black is a nurse over there, for example, and she cannot look after that child. वहाँ वो black maid घर पे तो आपके बच्चे का ध्यान रख सकती है, लेकिन वहाँ अगर black nurse है तो वो आपके बच्चे को की देखभाल नहीं कर सकती वहाँ पे. और उसका कारण क्या है कि उस टाइम पे रूल्स थे ऐसे कि जो ब्लैक नर्सेज हैं, they were not allowed to look after the white patients, कि वो white patients का ध्यान की देखरेख वहाँ पे नहीं करेंगी. They would not nurse the white patients. That was the rule. I asked these questions and they were immediately upset by the fact that I started opposing them because they considered me such an important asset. In fact, a few days after that, when I now read what happened to people who opposed the government, I believe there may have been an attempt on my life. And he says that when I asked them this question, they were upset. उनको अच्छा नहीं लगा कि मैंने ये क्वेश्चन किया. अब वो क्वेश्चन क्या है, देखिए वो स्ट्रेटेजिकली वो क्वेश्चन पूछ के वो इनफैक्ट he is not asking that question. He is questioning their laws. कि जो लॉ अपने प्लेस है वहाँ पे कि जो एक ब्लैक नर्स है वो एक वाइट पेशेंट को नर्स नहीं कर सकती. इस लॉ पे या इस रूल पे वो क्वेश्चन मार्क लगा रहा है. लेकिन वो कैसे लगा रहा है कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप मेरा हेल्प करिए उसका जवाब देने में. और ये सवाल क्या है जो लोग मुझसे पूछते हैं जब मैं बाहर जाता हूँ. एंड दैट इज कि अगर घर में आपके जो सर्वेंट्स हैं, they can do all the work for you, why can not a black nurse take care of a white patient in the hospital? And जब उसने ये question किया तो naturally they were upset because it was questioning them. And he says that they were upset because I started opposing them, और because they considered, और उसका एक और कारण भी था कि एक तो oppose कर रहा था, और oppose भी कौन कर रहा था, जिसे वो क्या समझ रहे थे was an important asset. Now asset क्या होता है, एक useful or valuable thing or a person or a skill which is valuable for you as a person or as a society or an institution. For example, a very hard-working person is an asset for the institution, or your certain qualities are an asset for you. So वो कहते हैं कि मैं उनके लिए था. वो शुरू में हमें पिछले उसमें ही बता के गया है कि क्योंकि उसने वो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया था तो उसकी वो सारी दुनिया में एक था कि साउथ अफ्रीका के डॉक्टर ने काम कर दिया, और यहाँ
वही डॉक्टर उन पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा था. So they did not like it. And in fact, a few days after that, when I now read what happened to people who oppose the government, कहते अब जब मैं रेट्रोस्पेक्ट में देखता हूँ और पढ़ता हूँ कि उन लोगों के साथ क्या हुआ जिन्होंने गवर्नमेंट को अपोज किया, और वो क्या हुआ वो बता नहीं रहा, but we can make it out that either those people were sent to prison or they got killed or they were punished in some way. He says, I believe there may have been an attempt on my life. Now, attempt on my life means an act of trying to kill someone, and that somebody might have tried to kill me. Now he tells us the incident, why he is saying so. A few days after I made that statement, my wife and I went to a restaurant. We came out of the restaurant and a car knocked us down. We were both nearly killed. They arrested a black man. According to them, it was him, but he was found not guilty in the court of law because the magistrate said that there was absolutely no evidence he was there. There were people who said that there was a car waiting on the side of the road and that they saw the car pull out and go straight for us. It may have been an attempt on my life because I opposed apartheid. Now he describes the incident that he went to a restaurant. कुछ दिन बाद जब उसने ये स्पीच दी लास्ट, जो उसने बताया कि जिसमें मैंने लोगों से पूछा कि मैं जब बाहर जाता हूँ तो मुझसे इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं. So they were coming out of that restaurant and suddenly a car came and they were knocked down. Knocked down means to strike down to the ground with a blow. के पीछे से उनको टक्कर मारी और वो गिर गए. And they were nearly killed, both of them, he and his wife. And of course, when it happened, somebody was to be arrested, क्योंकि अगर इसको attempt to murder भी ना माने, अगर किसी ने गलत ड्राइविंग की वजह से भी ऐसा किया तो किसी ना किसी को उन्होंने पकड़ना था. And they arrested a black man. According to them, it was him. Officially, they said this black man had tried to kill them or he hit them. But then, of course, the case went to the court. And court में क्या है कि आपको evidence produce करने पड़ते हैं, और उन evidences को जब court ने देखा तो court का जो verdict था वो ये था कि there was absolutely no evidence that he was there, कि ये evidence भी नहीं था कि वो वहाँ पे था. That person was present there. And this person was blamed कि उसने उनको hit किया है. And there is that blame was put on somebody else. जिन्होंने उसको hit करने की कोशिश की वो लोग escape कर गए. And his interesting thing is that it is the black man who is being blamed. कि जिसको blame किया जा रहा है वो black man है. और डॉक्टर खुद ये कहता है कि he was innocent, और at least ये लग तो रहा है कि कोर्ट को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला. And he says, he tells that other people informed him. जो आसपास के लोग खड़े थे, उन्होंने जिनको देखा, उन्होंने उसे इन्फॉर्म किया या उसको बताया कि there was car waiting on the side of the road. वो वहाँ खड़ी उनका वेट कर रही थी. And that they saw the car pull out. Pull out means, guilty word आया है ऊपर, जिसका मतलब होता है person who has done something wrong, जिसे हम मुजरिम कहते हैं. तो he was not found guilty, कि उसने ऐसा नहीं किया था. Then pull out का मतलब होता है to drive out of something, कि कहीं से निकाल के ना. तो कहते हैं कि उन्होंने देखा कि वहां से वो कार निकली and वो सीधी उनकी तरफ आई. It was not accidental hit, that it aimed at them. उन पे उसका निशाना था और वो उनकी तरफ आई और उनको हिट किया. And he says, I think, उसका ये मानना है, it may have been an attempt on my life because I opposed apartheid, कि मुझे मारने की कोशिश हो सकती है. It might have been an attempt to kill me and my wife, of course, because, and the reason was that because I was opposing apartheid, and of course the government of the day had put this policy in place. Now N. Ram asked him, when was this? That means, when did it happen, this incident he's talking about? And he tells it was around 1972 or 73. Now next question is that the horrific effects of apartheid on black people are well known. What about its impact
on whites, especially white intellectuals and professionals like you. So next question is that, of course, everybody knows, today at least now when NRA is taking this interview, that apartheid policy had a very negative, in fact, had a horrific effect on the people, black people, because it was a discriminatory policy, and it took away all the civil rights of the black people. So we know, he says, that how it had affected the black people. But what was its impact on the white people in general? And specifically he asks about intellectuals and professionals because he is a doctor. And what he is asking कि जो black लोग थे, क्योंकि उनके खिलाफ ये पॉलिसी थी, तो उन पे इसका कितना बुरा असर है सब जानते हैं, लेकिन जो whites के ऊपर इसका क्या असर हुआ, और खास करके इंटेलेक्चुअल्स जिसे हम बुद्धिजीवी कहते हैं, या प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट था इस पॉलिसी का. I'm glad you have raised this question, because you see, a lot of people believe that only blacks suffered because of apartheid. That's not true. The whites suffered severely. First, we paid high taxes to support apartheid because we had to support homelands, and they had homelands they had, and maintain all the laws they had. Now, severely means in a very bad or a serious way. So he says, I'm very happy you have asked this question, because most of the people believe that apartheid policy was bad only for the black people. But it is not so. It was bad for the white people also, and he gives his reasons. And the first reason, he says and he says they suffered a lot in a very, they suffered very severely. And the reason was, first reason he gives is that because apartheid policy put certain laws in place, and in order to implement those laws, they needed, for example, certain police force or administrative workforce, which the people who would put those laws in place. For example, if you are restricting the entries of black into a particular place, you have to put somebody over there who would stop them from going into that place, or maybe giving them punishment, or charging some fine, whatever it is. कि अगर आपने ये सारी जो पॉलिसीज बनाई हैं डिस्क्रिमिनेटरी, आप उनको लागू भी करोगे, और लागू करने के लिए आपको पुलिस की, आर्मी की, सिक्योरिटी पर्सनल्स की, या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, जो उन सब लॉज को देखेंगे कि अगर वो होमलैंड हैं तो वो मेंटेन हों. अगर हमने कहा कि आप पब्लिक प्लेसेस पे अलग अलग बैठें तो वो देखा जाए कि वो बैठें. अगर हमने ये कहा है कि यहाँ ब्लैक्स नहीं जाएंगे तो उनको ये चेक करे कि कोई नहीं जाए, और ऑल दिस. और उसके बाद उसकी, अगर वो ऐसा कोई नहीं करता है तो उसके अगेंस्ट जो एक्शन होना है, तो इन सब के लिए भी खर्चा होता है, और ये खर्चा कहाँ से आता है. एंड डॉक्टर बर्नर्ड टेल्स दैट all this was paid by the taxpayer, and there were high taxes, and these taxes were had to be paid by the white people. कि white लोगों के ऊपर high taxes लगे, और बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, जो वहाँ से पैसा इकट्ठा होता था तो वो यूज़ किया जाता था. So the white people had to pay very high taxes in order to maintain the policy of apartheid. And now next impact, he tells us, was that we were ostracized by the outside world even as doctors. Ostracized means exclude from the society or a group, कि आपको शामिल ना किया जाए, अपने अलग कर दिया. जैसे मैंने बताया कि उस टाइम पे जो क्रिकेट टीम्स थी, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ओवर, दे वुड नॉट प्ले मैचेस विद द क्रिकेट टीम ऑफ अफ्रीका in order to condemn the policy of apartheid. So, and of course that was the official stance, but otherwise also people did not approve of this policy, apartheid policy, and therefore the whites from Africa, he says, were ostracized by the outside world, even as doctors, even when they were professionals. I remember that one day I came to Dallas and was with a friend who was from Syria. We stopped at a hotel and we put our suitcases out, and the man at the door took our suitcases. He heard us talking. We had foreign accents, and he asked my friend, "Where did you come from?" He said, "I come from Syria." Then he said,
You, where do you come from? I said, I come from South Africa. He put my suitcase down and said, I don't carry suitcases of South Africans. Now, he tells us one incident कि जो वो बात कह रहा है वो क्यों कह रहा है, और वो बताते हैं कि he was in Dallas, और उनके साथ फ्रेंड थे जो सीरिया से थे, एंड दे गो टू अ होटल, एंड वो होटल में जब रुकते हैं तो अपने सूटकेस रखते हैं, तो अ मैन कम्स एंड टेक्स देयर सूटकेसेस, और जब वो उनको बात करते सुनता है तो उनके एक्सेंट से उसको लगता है कि दे बिलोंग टू सम अदर कंट्रीज, दे आर नॉट नेटिव्स, यहाँ के रहने वाले नहीं है, बाहर के हैं. तो ही आस्क्ड वेयर डू यू कम फ्रॉम, उनके फ्रेंड से पूछा और उनके फ्रेंड ने बताया क्या है, कम फ्रॉम सीरिया. देन ही आस्क्ड डॉक्टर बर्नर्ड, you, where do you come from, आप कहाँ से आए हैं? And when Dr. Bernard told him that he was from South Africa, he immediately put his suitcase down, उसका suitcase वहीं रख दिया, और उनको क्या कहा, I don't carry the suitcases of South Africans, मैं उनके suitcase नहीं उठाता, because he did not like them, he did not approve of the policy. So this was the kind of treatment he said we met, कि इस तरह का सलूक हमारे साथ होता था, और ये जो था वो इम्पैक्ट था अपार्टाइड की पॉलिसी का. What about blood transfusion? Next question जो एनराम पूछते हैं वो है blood transfusion के बारे में, and he is not asking about simple medical procedure, but he is asking about it in the context of white and black issue. They didn't worry about that. They didn't worry about donations of organs and transfusions. They didn't mind you operating on a black man in operating room where you had just operated on a white man, and they didn't care about that because I suppose they were unconscious. Now he says that in issues पे वो bother नहीं करते थे कि ट्रांसफ्यूजन कैसे हुआ, ऑर्गन्स कहाँ से आए, उस ऑपरेशन थिएटर में किस पे पहले ऑपरेट हुआ, बाद में कौन ऑपरेट हुआ, क्योंकि वो एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद इसलिए क्योंकि वो अनकॉन्शियस होते थे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ और इम्पैक्ट ऑफ एनेस्थीसिया, क्योंकि सर्जरी होती तो उनको होश नहीं होता था, तो वो इन चीज़ों पे ऑब्जेक्ट नहीं करते थे. बट देयर वर अदर रूल्स इन प्लेस रिगार्डिंग हॉस्पिटल्स, जैसे कि हमने पहले बात की नर्सिस को लेके था कि वो दे कुड नॉट नर्स द वाइट पेशेंट्स, ब्लैक नर्सिस कुड नॉट नर्स white patients. So here he says that we had colored students and black students in our class, not many, but few of them. If they brought out one white patient, these students had to get up and leave the next moment. They were not allowed to watch the demonstration. But even worse, they were not even allowed to watch the post-mortem on white patients. तो कहते हैं कि जब जो मेडिकल कॉलेजेस के साथ हॉस्पिटल्स होते हैं तो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, वो जब कोई सर्जरी हो रही होती है या कोई प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं तो दे स्टैंड ओवर देयर, वो वहाँ खड़े रहते हैं इन ऑर्डर टू वॉच. वो ऐसे ही सीखते हैं कि वो प्रोसीजर्स या वो सर्जरीज कैसे होती हैं. तो कहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ ब्लैक स्टूडेंट्स और कलर्ड स्टूडेंट्स भी थे, ज़्यादा तो नहीं पर कुछ थे, और जब वो ऐसी देखने के लिए वो खड़े रहते तो जैसे कोई वाइट पेशेंट आता तो उनको उठ के जाना पड़ता था, यानी कि वो वाइट पेशेंट के ऊपर उस प्रोसीजर को होते हुए या उस सर्जरी को होते हुए नहीं देख सकते थे. इसी तरह कहते कि इससे भी वर्स क्या था कि दे वर नॉट अलाउड टू वॉच द पोस्टमार्टम. पोस्टमार्टम तो डेथ के बाद होता है, वो भी वाइट पेशेंट के ऊपर होता हुआ क्योंकि वो उस टाइम सारी बॉडी खुलती है, तो उनको वो भी देखने नहीं दिया जाता था. So the national party, and he finds it unbelievable because he's a doctor, तो उसको समझ नहीं आती कि ये क्या बात हुई. The national party government was really paranoid about white and black and color. Paranoid एक mental condition होती है जिसमें आपको delusions होते हैं कि, और extreme anxiety और suspicion कि ये कैसा क्या कर देगा और ये ऐसे हैं और ऐसा हो जाएगा. सो कहते कि वो लोग जो थे वो वाइट, ब्लैक और कलर्ड के इशू को लेके बड़े पैरानॉइड थे. There are different ways in medical profession. Some people are dedicated professionally. They are at great public institutions, teaching hospitals and so forth. Others make money through their ears. अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं अबाउट मेडिकल प्रोफेशन कि
उसमें बहुत सारे लोग हैं और तरह तरह के लोग होते हैं, उनके अलग अलग ढंग हैं। कुछ लोग जो हैं बहुत प्रोफेशनली डेडिकेटेड और डिवोटेड और सिंसियर होते हैं। कुछ लोग अच्छी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, कुछ टीचिंग हॉस्पिटल्स में, और कुछ जो है दे मेक मनी थ्रू देयर ईयर्स मतलब बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से भी ज़्यादा अगर हम कहें तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसा बनाते हैं। एंड हिज रिस्पॉन्स इज, आई एम सॉरी दैट आई डिडंट मेक मनी। कहते मैंने नहीं बनाया। एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज द पर्सन हु परफॉर्म द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट did not make much money. And Enram is also surprised and he says, really, why was that? पूछते हैं कि ऐसा क्यों? Well, because I was in a university and in an academic atmosphere, we didn't get paid very well. Academic होता है जो related to education होता है, जैसे हम लोग भी academics में हैं। तो कहता है कि मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में था और मेरा जो एनवायरनमेंट था वो एकेडमिक था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें पैसा नहीं मिलता था। वी वर नॉट पेड वेरी वेल। नो ऑपरेटिंग फीस, नॉट इवन फॉर द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। सो ही सरप्राइज्ड। वो कहते कि आपको ऑपरेट करने की कोई फीस नहीं मिलती थी, नथिंग। वेदर वी ऑपरेटेड ऑन 1 पेशेंट और 500 पेशेंट्स, यू गॉट द सेम सैलरी। कहते हम एक को ऑपरेट करें या 500 को, हमें एक ही सैलरी मिलती थी। But what kept me there was the fact that we had excellent research facilities. तो कहते मैं वहाँ क्यों रुका? क्वेश्चन आता है, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि अगर सैलरी भी अच्छे से नहीं देते थे, आप कितने मर्जी सर्जरी करते रहो, आपको मिलेगा भी उतना, तो वो क्यों वहाँ पे काम कर रहा था? एंड ही गिव्स द रीजन, बिकॉज उनकी जो इंस्टीट्यूशन थी वहाँ पे जो रिसर्च की फैसिलिटीज थी वो बहुत अच्छी थी। दैट वॉज द कॉम्पनसेशन फॉर लो सैलरी। तो वो कम सैलरी को कंपनसेट कर देती थी कि उसके बदले में उसको, अगर सैलरी कम मिल रही थी तो उसके बदले में उसको कुछ और मिल रहा था, और वो थी कि उसको रिसर्च करने की जो फैसिलिटीज जो थी वहाँ पे मिल रही थी और अपॉर्चुनिटीज भी मिली। आई वॉज ऑलवेज मच कीनर ऑन रिसर्च देन ऑन सर्जरी। कीनर मीन्स, कीन मीन्स ईगर, उत्सुक। वो कहते हैं कि हमेशा से जो मेरा इंटरेस्ट था वो सर्जरी से भी ज्यादा रिसर्च में था। I wasn't a keen surgeon. There are some surgeons who cannot live without operating, but I would live quite easily without operating. और कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कीन सर्जन नहीं हूँ, बहुत ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं ऐसे सर्जन होते हैं जो बिना सर्जरी किए रह ही नहीं सकते। कहते मैं बिना सर्जरी किए आराम से रह सकता हूँ, बट आई वॉज वेरी कीन ऑन एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज़। लेकिन उसका इंटरेस्ट कहाँ था? नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने में। एक्सप्लोर का मीनिंग क्या होता है? टू सर्च एंड डिस्कवर और फाइंड आउट मोर अबाउट समथिंग। दैट इज द एसेंस ऑफ रिसर्च, कि कुछ नई चीज को ढूंढ निकालना, नई चीजों को समझ पाना। कहते हैं मुझे इस चीज में बहुत इंटरेस्ट था, एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू गेट इन्वॉल्व इन द हार्ट सर्जरी व्हेन इट वॉज स्टार्टिंग। और कहते हैं कि ये मेरी खुशकिस्मती थी। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट दैट व्हेन हार्ट सर्जरी वॉज जस्ट पिकिंग अप, वो अभी शुरू हो रही थी, इट वॉज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ इट, I got involved with it. और उससे उसको क्या फायदा हुआ? There were so many different things we could work out in the laboratory. और हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते थे, बहुत सारी चीजें उस टाइम पे हम कर सकते थे, and that was, he says, my good fortune. So you really were an inventor surgeon. This is what Enram asked him. Inventor means जो नई चीज को खोजे। Yes, that was what I enjoyed. हाँ, इसी में मुझे मजा आता था। And then when I did the transplant and I was offered positions all over the world, I thought to accept would be wrong, because I considered myself a tree that was bearing fruit. And if you transplant a tree that's bearing fruit, it takes some time before it starts growing again and producing fruit. I thought I didn't have much time left to start growing again, so I stayed in Cape Town. और वो कहते हैं कि जब फिर मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया तो सारी दुनिया में से उसको ऑफर्स आएंगे अलग अलग हॉस्पिटल्स में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, कि आप आइए और हमें ज्वाइन कर लीजिए। पर कहते हैं कि मुझे लगा कि ये ठीक नहीं होगा, और उसका वो कारण क्या है? कहते हैं कि मैं अपने आप को एक ट्री की तरह देख रहा था। आई वॉज थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ एज ए ट्री, और ट्री कैसा? जिसके फाइनली फ्रूट आने शुरू हो गए थे। एंड अगर हम एक ट्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जो प्लांट होता है वो बहुत जल्दी चल जाता है। अगर हम किसी प्लांट को, वी ट्रांसप्लांट इट टू अनदर सॉइल,
it starts growing very quickly. But if you have to transplant a tree from one place to another, it would take some certain time to find roots over there. और कहते कि वहाँ जाके मुझे एक टाइम लगेगा कि मैं वहाँ पे दोबारा ग्रो करना शुरू करूँ और फिर मेरे पे जो है फ्रूट्स आने शुरू हुए. तो उसका मतलब क्या है इस इमेज का जो कंपैरिजन है कि अगर मैं किसी नई जगह पे जाता तो पहले मुझे वहाँ सेटल होने में टाइम लगता और फिर उसके बाद मैं कोई नई रिसर्च, कोई नई चीज़ें दे पाता. और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि आई हैव मच टाइम लेफ्ट, कि मेरे पास बहुत समय बचा था कि मैं दोबारा ग्रो कर सकूं. सो मैं इसीलिए आई स्टेड इन केप टाउन, मैं अपने उस शहर में ही. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन विच एन राम आस्क्ड क्रिश्चियन बर्नार्ड. What do you think is your finest achievement as a man of medical science? कि आपकी सबसे बढ़िया जो achievement आप मानते हैं medical science के as a person of medical science, वो क्या है? What I would like to be remembered for is not for doing the first heart transplant in the world. So पहला जो वो जैसे हमने introduction की कि डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड कौन है, तो हमने कहा कि he is the person who led the team of 20 surgeons जिन्होंने दुनिया का पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट किया. बट आयरॉनिकली वही पर्सन ये कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि मुझे इस तरह से याद किया जाए. सो आई डू नॉट वांट टू बी रिमेम्बर्ड दैट आई वाज द पर्सन हु परफॉर्म द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट. तो वो फिर कैसे याद किया जाना पसंद करेंगे? I would like to be remembered for the children I have treated for variety of abnormal heart diseases. कहते मैं उन बच्चों की वजह से याद किया जाना चाहूँगा जिनको मैंने कई तरह की जो उनको हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको मैंने ट्रीट किया, ठीक किया. That gives me the greatest satisfaction. सबसे ज्यादा कहते हैं कि वो मुझे उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है. रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंजेनिटली एबनॉर्मल हार्ट. कंजेनिटली हमने किया था जो बाय बर्थ हो, किसी को बचपन से ही बाय बर्थ ही कोई प्रॉब्लम है उनके हार्ट में, तो जो एक कंजेनिटली यानी कि बाय बर्थ एबनॉर्मल हार्ट था जो ठीक नहीं था, उसका रिकंस्ट्रक्ट करना. रिकंस्ट्रक्ट मीन्स टू बिल्ड अगेन, दोबारा से उसको बना देना, उसको ठीक कर देना. बिल्डिंग दैट इनटू अ नॉर्मल वन थ्रू सर्जरी. एंड ही यूजेस द वर्ड बिल्डिंग, कि उसको दोबारा से बना देना. टू मेक देम इनटू अ नॉर्मल हार्ट, टू क्रिएट अ नॉर्मल हार्ट फ्रॉम दैट. कि वो हार्ट जो बचपन से पैदाइश से ही बाय बर्थ खराब है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसको ठीक करके एक नॉर्मल हार्ट बना देना सर्जरी से. That's real cardiac surgery for me. कहते मेरे लिए जो दिल की जो सर्जरी है हार्ट की, उसके असली मायने जो हैं वो यही हैं कि वो दिल जो किसी कारण से बाय बर्थ ही जिसमें कोई खराबी है, कोई प्रॉब्लम है, उसको थ्रू सर्जरी में एक नॉर्मल हार्ट में तब्दील कर दूं. There was a little girl whom I went to see the day before her operation. I asked her, "My darling, what's wrong with you?" She said, "I have got a broken heart." When we mended her heart, that gave me the utmost satisfaction. Mend means repair. कहते कि वो एक बात बताते हैं और बड़ी poignant बात पे वो ये इंटरव्यू खत्म होती है कि वो कहते हैं कि एक बच्ची की सर्जरी होने वाली थी और उसकी सर्जरी से एक दिन पहले मैं उस बच्ची से मिलने गया. तो मैंने उससे पूछा कि बेटा, what's wrong with you? My darling, what's wrong with you? क्या हुआ है आपको? तो उसने कहा, I have got a broken heart. मेरा दिल टूटा हुआ है. Now it has two meanings. One is of course उसके दिल में प्रॉब्लम थी और वो हार्ट सर्जरी के लिए आई थी. बट अ चाइल्ड जिसके हार्ट में प्रॉब्लम हो, उसका वैसे भी दिल टूट जाता है. सो वी डोंट नो व्हाई दिस चाइल्ड सेड दिस, बट जब हम सुनते हैं इस बात को तो ये दोनों बातें हमारे दिमाग में आती हैं, दैट आई हैव गॉट अ ब्रोकन हार्ट. और वो कहता है कि जब मैंने व्हेन वी मेंडेड हर हार्ट, जब मैंने उसके दिल को दुरुस्त कर दिया, तो इससे बढ़िया मुझे और कोई सेटिस्फेक्शन नहीं थी. इससे सबसे ज्यादा मुझे जो है सेटिस्फेक्शन मिली. सो दिस इज हाउ he ends his interview, and I hope you enjoyed it. Thank you.